morning, dear students. I am Ms. Navida Sheikh from Brahan Mumbai Mahanagar Palika MCGM virtual class. I welcome all my dear students to another and interesting session. In today's session, we'll be learning something new and interesting from a science textbook. So let's get started. Good morning, dear students. I am Mrs. Navida Sheikh from MCGM virtual class. I welcome all my dear students to another and interesting session. In today's session, we'll be continuing with the next part of the chapter, that is work and energy. Now, we've already completed the first part of the chapter of work and energy. In that part, we have learned about what is the meaning of work and what is the meaning of energy. Alright, today we'll be learning further ahead more about energy. Alright, so if you haven't watched the video, please go and watch the first video of work and energy. That will help you to understand the next part in a much better way. So let's get started. Now the first thing that we'll be learning is the forms of energy. Last video we have learned about what is the meaning of energy, and today we'll be learning the various forms of energy. Now we will be talking about various forms like the mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy and chemical energy. So these are the 5 forms of energy that we'll be discussing in today's class. So please see to it that you pay attention. The very first thing that we are going to learn in the forms of energy is the mechanical energy. Now when I talk about mechanical energy, the first thing that comes to my mind is machines, right? So in this above examples, we see that when the rubber of a catapult is stretched and released, it comes back to the original state and the stone flies off. You must have done this in your at your playgrounds, or you must have played this game. या फिर हम लोगों के पास नॉर्मल रबर बैंड भी हम लोग लेकर हम लोग you could take a piece of paper and do this and see what happens. Okay, instead of a stone, you can use a paper ball and try this with the rubber band. So here what is happening is the energy which is stored in an object, that is in your body, due to specific change or position of that object is called potential energy. So here there are different forms of energy that I have explained previously also about kinetic and potential energy. I have given you a gist of it कि ये क्या होते हैं. Now this potential and kinetic energy that we are talking about is coming under mechanical energy. So any activity that you do in order to move a particular object or in order to stop a particular object, that comes under mechanical energy. The energy used for doing mechanical work is called mechanical energy. There are 2 types of mechanical energy, namely potential energy and kinetic energy. Potential energy is obtained due to position and kinetic energy is obtained by motion. Okay, so this is what we have already learned in our previous video also, and today we will be learning more about this potential and kinetic energy, how this potential energy is known to be stored energy and how this kinetic energy is known to have energy when an object is moving. Let us understand in detail about kinetic energy. It's the energy an object has due to motion. Any object which is moving, okay, it has energy in it. Now which energy it has? It has kinetic energy. Example is a moving bowling ball has energy that causes the pins to fall. You must have gone to a mall or a place where you must have seen bowling, or if you haven't seen, you can see it in the picture. ये हम लोगों ने देखे हैं, इसे हम लोग कहते हैं bowling balls. This ball that you see, huge ball, और ये जो white कलर की bottles है, इसे pins बोलते हैं. ठीक है, ये pins को रखा जाता है और ball से उसे मारा जाता है तो वो pins गिर जाती है. तो this moving ball has energy. जब हम लोग अपने हाथ से ये energy बॉल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बॉल है ये मूव हो रहा है, कंटिन्यूसली इट कीप्स ऑन मूविंग, और वो बॉटल्स एट रेस्ट है, वो बॉटल्स मूव नहीं हो रही है, बट हमारे बॉल के वजह से वो गिर जाती है. दैट मीन्स ये जो बॉल है इसके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये मूव हो रहा है ना, तो दैट मूविंग बॉल हैज एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी which is kinetic energy. This energy is called as kinetic energy. Now the skydiver has kinetic energy. When the skydivers they fall,
their body is continuously moving ना, वो लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो उनकी body move हो रही है, ठीक है. So that is also kinetic energy. A ball kicked by a football player has a kinetic energy. जब ये football player ball को kick करता है तो ये ball move हो रहा है, तो again this has a kinetic energy. Imagine those two rocks are rolling down the hillside with the same speed. Now you can imagine this big rock and there are small rocks. Okay, imagine those two rocks are rolling down the hillside with the same speed. Which one will have more kinetic energy? Can you guess? Which one will cause more damage if they hit something, is hit at something at the bottom? The larger rock could cause more damage because it has larger mass and has more kinetic energy than the smaller rock. So, the larger rock will move faster and has more kinetic energy than the smaller rock. Kinetic energy also depends on speed. The faster object has more speed and has more kinetic energy. So here if you see the cars moving, the one which is moving faster has more kinetic energy. Okay? And the ones which are moving with a lesser speed has less kinetic energy. मतलब कोई भी moving object, ठीक है, जब move होता है तो उसके अंदर कौन सा energy store होती है? उसके अंदर होती है kinetic energy store होती है. Transferring kinetic energy. Now, kinetic energy could be transferred from one object to another when they collide. So, here in this picture, you can see that the bowling ball is hitting the pins. Means it is transferring the energy which is there in the ball to the pins. Ball के अंदर जो energy है वो transfer हो रही है, वो जा रही है pins के अंदर. तो ऐसा हो सकता है, ठीक है. The bowling ball does not touch all the pins, but it can knock them down with one roll. सारे बॉल्स, ये जो सारे पिन्स है वो सबको टच नहीं करता बॉल, बट वो सारे पिन्स गिर जाते हैं. क्यों? बिकॉज एक बॉटल से दूसरी बॉटल, दूसरी बॉटल से तीसरी बॉटल, ऐसे करके हर बॉटल के अंदर ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसकी वजह से ये सारे पिन्स गिर जाते हैं. द बॉलिंग बॉल ट्रांसफर्स काइनेटिक एनर्जी टू फ्यू पिन्स. द पिन्स विल ट्रांसफर दिस काइनेटिक एनर्जी टू ईच अदर एंड नॉक देम डाउन. अंडरस्टूड? सो इट इज एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर. ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो एनर्जी थी वो बॉल में जा रही है, वो बॉल मूव हो रहा है, तो जो मूविंग बॉल है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. नाउ दैट काइनेटिक एनर्जी हिट्स वन और टू पिन्स ओवर देयर. जो बॉटल्स है ये एक दो पिन्स को ये बॉल टच होता है, तो इससे ये काइनेटिक एनर्जी बॉल्स के पिन्स के अंदर चले जाती है. एंड नाउ द पिन्स will touch each other and transfer small amount of kinetic energy to each other and the pins will fall down. ठीक है, तो this is transferring kinetic energy. A transfer of kinetic energy takes place when dominoes falls. You must have seen this in ads also. This is a type of a game which you can play. When you tap the first domino, you give it a kinetic energy. जब हम लोग एक को टच करेंगे तो उसके अंदर kinetic energy आ जाती है, वो मूव होने लगता है. And when the domino starts to fall into the next one and the kinetic energy will be transferred from one domino to another. Now these are called as dominoes. Okay, खाने वाला पिज्जा नहीं. This game is called as domino. Now if you arrange them like this and if you try to touch one of the domino pin, ठीक है, अगर हम लोग उसे हाथ लगाते हैं तो what will happen, हमारे हाथ से kinetic energy वो डोमिनो के अंदर चले जाती है. Now that it starts to fall. जैसे वो गिरने लगता है वो अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर करता है, दूसरा वाला तीसरे में. This keeps on going until the last one drops. ठीक है, so here also you can see kinetic energy being transferred from one domino to the another. This skater has no kinetic energy as she is standing at the top of the hill and not moving. Now this skater, here you can see she is at one particular point only. She is not moving down. So she doesn't have any kinetic energy. Whereas in the next picture, as the skater starts to move down, she is moving faster and has kinetic energy which has increased. Alright, so when the skater is coming down, when they do ice skiing, that time when they're coming down, they tend to have kinetic energy. मगर जहाँ पर वो लोग रुक जाते हैं वहाँ पर kinetic energy नहीं होती.
Remember, energy cannot be created nor destroyed. So where does this kinetic energy come from? Energy कहाँ से आ रही है? Let us see that. Gravity pulls the skater down the hill. Now when she is standing and when she starts to move little bit, there is gravitational force which tries to attract that girl or any object which is on the top. ठीक है? If the skater was standing at the bottom of the hill, gravity wouldn't start her moving. ओके अगर वो नीचे ही खड़ी होती तो वो और ज्यादा मूव नहीं होती बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल नहीं कर रहा, उसे ऑलरेडी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ही उसकी बॉडी है. When the skater is at the top of the hill, she has a form of energy called potential energy. Now when she is at the top, there is some amount of stored energy in the body. कभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर रुका हुआ है मतलब उसके अंदर एक ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मूविंग एनर्जी जो होती है वो है काइनेटिक एनर्जी और जो स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. Now let us understand more about potential energy. It's the energy that is stored because of an object's position. The higher an object is lifted above the earth, the greater is its potential energy. जितना ऊपर अगर हम लोग एक बॉल थ्रो करते हैं ऊपर, वो जितना ऊपर जाएगा और वहां पर एक पॉइंट आ गया वो 2 सेकंड के लिए भी, not even seconds, for a fraction of a second it will stay there and then it starts to fall down. तो वो जो seconds में ऊपर वो जितना ऊपर गया है वो बॉल, वहां पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से नीचे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो बॉल फिर से नीचे आने लगता है. ठीक है, सो जब वो बॉल ऊपर जाकर एक पर्टिकुलर हाइट पर रीच करता है, दैट बॉल दैट टाइम हैज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, जैसे वो लड़की जब एक ऊपर हाइट पे चली गई थी तो उसके पास और वहां पर खड़ी थी, तो दैट मीन्स द बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी. और जब वो स्टार्ट करने लगी उसकी बॉडी मूव करना नीचे की तरफ, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड. Converting potential into kinetic energy. Now this could also be done. Let us see that. Now if you blow a balloon, हम लोग जब बलून को ब्लो करते हैं ना, तो उसके अंदर जब हम लोग एयर भरते हैं तो दैट एयर इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टोर्ड है, वो बलून अभी कहीं मूव नहीं हो रहा है. बट जैसे ही हम लोग बलून को ओपन छोड़ देते हैं वो एयर के साथ में, द बलून स्टार्ट्स टू मूव रैंडमली इन द एंटायर हाउस, राइट, उसमें से हवा निकलने लगती है. तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी. जब वो बलून मूव होने लगता है बिकॉज ऑफ द एयर विच वॉज फिल्ड इनसाइड, इट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अंडरस्टूड? तो जब हम लोग एयर भरते हैं मतलब हम लोग उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड व्हेन द बलून स्टार्ट्स टू मूव हियर एंड देयर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. Here also you must have sat on a ride. Okay, when you go to an amusement park, there are different kinds of rides over there. Now when you sit on a roller coaster, what happens is the roller coaster goes up and it stops for a fraction of time, seconds. Now जब हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं ना रोलर कोस्टर में, तो वहां पर अब ये जो रोलर कोस्टर है उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये नीचे गिरता है, झूला हमारा जो रोलर कोस्टर जब नीचे आता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो झूला नीचे आने लगता है. जब वो नीचे झूला आने लगता है तो वो एनर्जी कौन सी हो गई, वो झूले के अंदर वो मूव हो रहा है ना रोलर कोस्टर, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Here also you can see the boy is climbing up the hill. Now the cycle and the boy has kinetic energy. When they go up and reach the top, that is potential energy, and when the body comes down, again it is kinetic energy. So I hope with this the concept of converting, transferring kinetic potential energy into kinetic energy is clear to all of you. Now here, maximum potential energy and minimum kinetic energy. Let us understand that. When you throw a ball upwards, it is moving the fastest, so it has maximum kinetic energy. As the ball moves upward, it slows down and stops for an instant, right? ये एग्जाम्पल मैं पहले भी आप लोगों को दे चुकी हूँ. जब हम लोग बॉल ऊपर फेंकते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और ऊपर जाने के बाद वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, इंस्टेंट्स के लिए, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसमें. As the ball moves downwards, it speeds up and potential energy is transferred into kinetic energy. So I hope
These examples were quite useful to you all to understand about the difference between potential energy and kinetic energy. So, in short, we can say that the energy obtained from motion is called kinetic energy. So, here you can see two marbles being placed. When you hit one marble with another marble, the first marble also tends to move. Okay, so this is kinetic energy. Let us move on to the next form of energy, that is heat energy. Heat energy is a very common energy that you must have felt every day when you're coming to school also, in your house also. Okay, the earth receives heat in proper quantities from the sun. That is how an atmospheric temperature favorable to the living world is maintained. Heat is a form of energy. Sunlight contains heat energy. So when we are talking about heat, sun is the very first form of energy that comes to our mind. सन से हम लोगों को जो हीट मिलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड आवर बॉडी टेम्परेचर इज आल्सो maintained because of the sunlight that we are getting from the sun. So heat is a form of energy and sunlight contains heat energy. If you want to notice, you can do an experiment. You can take a convex lens and hold it over a sheet of paper in sunlight. You can see it in the image. Okay. Now when you move the lens in such a way that there is a tiny spot of light on the paper, ऐसी तरीके से पकड़ेंगे ताकि एक light का एक spot हमारे paper पे पड़े. And when you hold the lens in this position for a while, you will notice that there will be smoke coming out, and ultimately if you hold it for a very longer time, you will find that there is fire coming out. Okay, so this is what is an example or experiment that you can see to understand that sunlight also has heat in it. Okay, apart from that, the gas that you have in the house, when you're burning something, you have heat coming from it, right? कभी भी हम लोग कुछ चीज पकाते हैं तो हमारा यूटेंसिल गर्म हो जाता है, पानी बॉईल होने लगता है, मिल्क बॉईल होने लगता है, and that is all because of heat energy. Let us move on to light energy. Now plants make their own food with the help of sunlight. Sunlight is very important for every living organism. Okay, plants also. Plants get sunlight and they use that sunlight to prepare their own food with the process of photosynthesis. We have learned this many a times. It means that light energy is transformed into the energy in food. Yes, जब light energy मिलती है plants को तो हम लोग convert करते हैं into food energy. Food which gives them energy. Plants and animals use this food for doing their work. So we all get sunlight. Plants use this sunlight to prepare their food. We make use of the plants and even animals make use of the plant and get energy. Okay, so this is a form of energy. Here, let's move on to the next type of energy, that is sound energy. Sound energy, you must be wondering how sound has energy. You must have noticed that when you play a speaker, okay, you have sound coming from it. ठीक है, कोई भी टेलीविजन चालू करते हैं हम लोग या फिर कोई भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो उसमें से साउंड की आवाज आती है. So sound is used to control the movement of some toy cars. This means that some work is done by sound also. It tells us that sound is a form of energy. Now here if you see when they're playing a band, there is a sound coming and you must have noticed that the speakers, when you keep sparkles over it or sand over it, you will notice that they tend to bounce. Means there is a form of energy which is there in the sound also, which is coming from the speakers. Okay, so sound is also a form of energy. Next is chemical energy. When you burn wood, we get heat and light. Everybody must have seen, यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है, जब हम लोग वुड को बर्न करते हैं तो गर्मी भी लगती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है. So sometimes we hear a crackling sound as well. कभी कभार साउंड की भी आवाज आती है ना लकड़ी जलने की वजह से. So what makes this happen? The energy stored in wood is emitted in various forms through chemical action. ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वुड के अंदर
जब वो बर्न होती है तो वो वेरियस फॉर्म्स की तरीके से रिलीज होती है, बिकॉज देयर इज अ केमिकल विच इज स्टोर्ड इन द wood. Also, it is due to chemical action in the lead acid battery that electrical energy is produced. You must have noticed this type of batteries are used in your cars or in the motorbikes ताकि हमारी गाड़ियां चल सके. ठीक है, अब हम लोग हर जगह पर चार्जर और चार्जिंग पॉइंट तो लेके नहीं जा सकते ना, ताकि हमारी गाड़ियां चल सके. So there are these batteries which are actually converting the acid battery into electrical energy. ठीक है, chemical energy into electrical energy to perform work. हमारे घर में जो छोटी छोटी बैटरीज होती है, जो हमारे टॉयज में होती है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी उसके अंदर रहता है, केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो टॉय कार्स है, हमारी वॉल क्लॉक है, हमारी रिस्ट वॉच है, रिमोट कंट्रोल्स है, ये सारे चलते हैं. So the energy obtained through chemical action is called chemical energy. Understood? So here you can see in this picture the chemical energy in the battery. If you place it in the torch, the torch lights up and gives you light energy. So this is how the chemical energy is converting into electrical energy. Understood? So here there are a few more examples how light energy converts into chemical energy. Next, when you eat certain food, that is a chemical energy, and in your body when you eat it, हम लोगों को ताकत मिलती है और उससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के यूटिलाइज कर सकते, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में काम कर सकते हैं, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग साइकिल चला सकते हैं, खाना पका सकते हैं, वी कैन स्टडी. सो दीज आर ऑल वर्क दैट यू कैन डू बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग खाना पका सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं. इफ यू हैव पेट्रोल है, डीजल है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ियां चलती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो हम लोग को हेल्प मिलती है उससे. ठीक है, so this is how the energies, different forms of energy, they convert into different forms and provide you with so many types of benefits. So with this we come to transformation of energy. As I told you in the previous slide कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो इन द कोर्स ऑफ द वाटर साइकिल, वाटर इवेपोरेट्स. जब वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता है तो वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. यस, एवरीबडी नोज दिस. अब ये जो हीट ऑफ द सन की वजह से वाटर इवेपोरेट हो गया, तो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो गई यहाँ पर. Now this water vapor forms clouds that gives rain, right? ये water vapor ऊपर जाके clouds बनता है और उससे हम लोगों को rain आती है. The rain water flows into rivers and it's stored in reservoirs or dam. हमारे यहाँ पर डैम्स होते हैं जहाँ पर ये एनर्जी पानी स्टोर होता है, रेन वाटर. जब ये पानी डैम्स के जो टर्बाइंस के ऊपर गिरता है तो वहां पर अगेन व्हाट विल हैपन, these are at a height and therefore their water has potential energy, right? हम लोग ने पढ़े थे ना, एक हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. जब ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ, पानी जब ये नीचे की तरफ गिरता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइंस, its kinetic energy is transferred to the turbine. The turbine rotates. ठीक है, ये टर्बाइंस रोटेट होने लगते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो आप लोग देख सकते हो कि ये पानी कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है. दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. The electrical energy is used in our houses for various purposes. It is transformed into light energy on lighting a bulb, into kinetic energy on starting a fan, into sound energy while playing a music system, and into heat energy in an oven. Okay, so this transformation of energy is very important and everybody must notice this. आप लोग खुद कुछ examples के साथ में आओ जहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये form of energy से ये form of energy में transform हो रहा है. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग स्विच बोर्ड देखते हैं तो स्विच बोर्ड के अंदर हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. फैन है हमारा एक हाइट पे, तो उसके अंदर भी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी है. जब हम लोग ये फैन को मूव करने लगते हैं तो अंदर की जो मशीन मूव होती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी भी है. ठीक है, फैन की वजह से उसके अंदर फैन कभी कभार हीट भी हो जाता है तो उसमें हीट एनर्जी भी है. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है. सो इन दिस
वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वाटर साइकिल. आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है. एंड रिमेंबर, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी. Let us see a few more examples of energy transformation. Energy transformation occurs in energy changes if energy changes from one form to another. When the car sits in the sunlight, अगर हम लोग कार को पार कर देते हैं धूप में, कार को ही क्या, बाइक को, बाइसिकल को, कोई भी व्हीकल को अगर हम लोग धूप में खड़ी कर देते हैं, what will happen? The energy in sunlight changes to heat energy that warms the inside of the car. Yes or no? हम लोग अगर हमारी व्हीकल को धूप में खड़ा करेंगे तो एक्चुअली में तो धूप से क्या आ रही है, सन की लाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, बट ये लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी गाड़ी का अंदर का जो पूरा पोर्शन है वो गर्म हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. Chemical energy is stored inside our muscles. When you eat food, the chemical energy is going into your body. Okay, it gets stored in your body. When you push down on a bicycle pedal, chemical energy is used to make your legs move. हम जब push करते हैं pedals को तो chemical energy की वजह से ये pedals move होने लगते हैं ना, हमारी body के अंदर जो energy है उसकी वजह से हम लोग mechanical energy कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. The chemical energy stored in your muscle is transformed to energy of motion. ठीक है. So I hope this is also clear. During energy transformation, the total amount of energy remains the same. Energy is never lost or gained in any of the changes. It only changes the forms. ठीक है. Again I will repeat, energy is never lost or gained. It only changes from one form to the other. So this brings us to the next part, that is transformation of energy. Means energy can be transformed from one form to the other. Now in your body, when you eat food, the chemical energy that you are eating gets converted into work energy. Okay, so we get energy to work and perform various activities like mechanical energy, like riding a bicycle or moving around. Okay, so this is how energy is getting transferred. Some other examples you can see is electricity, then chemical energy. Chemical energy means the fuel that we get, and that fuel is used to convert another gets transformed into another type of energy like kinetic energy, electrical energy or mechanical energy. When we talk about electricity, this electricity will further go and convert light and into light energy, into sound energy, okay, into heat energy in some cases, like when if you have an iron at home or a geyser, the electrical energy gets converted into heat energy or light energy or sound energy. Okay, so this is how transformation of energy takes place every now and then in every object. Few more examples of energy transformation here we have is chemical, the batteries that you have in the torch light. Okay, that is chemical energy which is converting it into light energy or sometimes heat energy as well. Chemical energy like the fuel gets converted into mechanical energy which helps the car to move. Same way chemical energy I told you about the food which helps us to perform various activities like mechanical energy. Electrical energy transforms into light energy or sound energy or heat energy. Okay, and the last example of a tree is the light energy gets transformed into chemical energy in case of plant during the process of photosynthesis. Now, there are various forms of energy that we have learned, like you have hydroelectricity, you have solar electricity, solar energy. Okay, so we are making use of different things, like wind is transformed into electricity. Okay, same way here also the solar energy that is coming from the sun gets absorbed by the solar panel, and this solar panel converts this solar energy into various other energies like light, like sound, or any appliances that is attached to the
solar panel. Okay. So we can say that energy can be transformed from one type to another. Okay. Here we can see the windmills are there. Windmills will convert the wind energy into and convert it into electricity. Same way, even solar panels will convert it into electricity. Okay, which can be used later on for various other work. So, I hope with this part of the chapter is quite clear to all of you. In the next coming period, we'll be learning the next part of the chapter. Till then, thank you. If you like the session, please do not forget to subscribe to our channel so that you can share and This session was quite useful to you. In the next coming period, we'll learn something new and interesting. Till then, thank you.